Your bluelink account will now be authenticated through email. To make it easy to recover your password and link your vehicle to the correct ID, Hyundai introduces email authentication while creating your account. To create an account, open the bluelink app. Click on Create Account. Read and agree to the terms of use and privacy policy. Enter the email ID you want to register. Click on Check. Click on Confirm. Email verification is now sent to your email ID. Check your mailbox for verification mail. If the mail is not in your inbox, check your spam or junk email. Click on Verification. A tab is opened confirming that email verification is complete. Go back to the bluelink app and click on Confirm. Enter your password. Confirm the password. Enter your name. Enter your date of birth. Click on Sign Up. The account is created. Click on OK. You can now proceed with account creation as usual. This completes the module on email authentication. Hope you enjoyed the video. Your bluelink account will now be authenticated through email. To make it easy to recover your password and link your vehicle to the correct ID, Hyundai introduces email authentication while creating your account. To create an account, open the bluelink app. Click on Create Account. Read and agree to the terms of use and privacy policy. Enter the email ID you want to register. Click on Check. Click on Confirm. Email verification is now sent to your email ID. Check your mailbox for verification mail. If the mail is not in your inbox, check your spam or junk email. Click on Verification. A tab is opened confirming that email verification is complete. Go back to the bluelink app and click on Confirm. Enter your password. Confirm the password. Enter your name. Enter your date of birth. Click on Sign Up. The account is created. Click on OK. You can now proceed with account creation as usual. This completes the module on email authentication. Hope you enjoyed the video. नमस्ते, हम लोग स्वास्थ्य विभाग से आए हैं और कोरोना से संबंधित आपके स्वास्थ्य की जांच करना चाहते हैं, तो हम अंदर आ जाए क्या? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारी डॉक्टर हैं और ये आपके स्वास्थ्य की जांच करेंगे। बैठिए। सांस लीजिए। इस प्रकार की कोई भी मेडिकल टीम यदि आपके घर में आती है और कहती है कि हमें कोरोना से संबंधित स्वास्थ्य चेकअप कराना है, तो सबसे पहले आपका दायित्व है कि संबंधित व्यक्ति का आई कार्ड चेक करें, थाना चौकी से प्राप्त कर उसकी सूचना प्राप्त करें, क्या ये लोग ऑथेंटिकेट है, यदि है तो खुले स्थान पर अपना चेकअप कराएं। घर के अंदर उनको बिल्कुल भी घुसने दें, क्योंकि प्रायः देखा गया है कि घर में महिलाएं अकेली होती हैं और ये अपराध करने का एक नया तरीका है। अपराधी इस प्रकार से कोरोना को जो है अपने उसमें लेकर अपराध कर सकता है और चोरी कर सकता है,